And we are live. Cool stuff. Cool stuff. Cool stuff. So basically, I have no clue what I'm doing right now. I'll be doing just things that feels right at this moment, and just tell you stories. I know no one is there in my chat at this moment, and I'll take my time to figure this thing out because there might be other things that I would like to do and understand before I jump into it. What should I do? What should I do? Screen म्यूट स्क्रीन शेयर क्या है भाई स्क्रीन शेयर करने के लिए नाइस यूरेका ग्रेट आसिफ that's what I expect from you. Let me do one thing, let me put this in chat so that I can call out my friends who wants to come and chat chut थोड़ी बतियाते हैं थोड़ी बातें शातें करते हैं you know my worst fear will be that I'll forget that I'm live and I don't want to speak things that I'm not supposed to. That's the worst nightmare. Worst nightmare for any of the thing that I do. कि मुझे वो सब चीज़ें नहीं करनी वो सब चीज़ें नहीं बोलनी जो नहीं बोलनी चाहिए basically. But that's not how it should be, right? You should have the liberty. You should have. And that's basically the fundamental of my new age learning. कि भाई गलतियां करो नई चीजें ट्राई करो that's when you feel that you're alive, and that is one of the reason I'm here. That is one of the reason I'm doing this because I've been up to a lot of things these days. अलग no Instagram चुप हो जाओ तो I've been up to a lot of things these days, and to be very honest things have been monotonous. और एक चीज जो मेरे से रियलाइज हुई है ना कि I want to become more of like I want to contribute back little more. Like मेरी बचपन से आदत रही है like all of this time the only thing I have looked forward to is learning something new, learning some new language, learning some new skill, learning some new life. एक बार मैं ये स्टोरी डाल देता हूँ तो if any of you will see will come and join. ये बॉटल हटा देता हूँ यार फ्रूटी की बोतल रखी हुई है. And we are live. थोड़ा सजा देता हूँ इस चैट को. Hop in if you are looking forward to some interesting conversations. Yeah, that's a good thing, right? लिंक डाल देता हूँ भाई बहुत नाम ब्रेकिंग है ये चीज लाइक you realize right I am in front of the whole world at this moment. Basically if anyone wants to listen to me they can. आई होप कोई आ जाए बतियाएंगे सतियाएंगे कुछ तो चलेगा. See, one thing that I have kept open out of all this is no that ये इंस्टाग्राम में जाएगा तो मेरे इंस्टाग्राम में बहुत तरह के लोग हैं. मतलब स्कूल के फ्रेंड्स हो गए ऑफिस वाले फ्रेंड्स हो गए कोई और हो गया
तो उनमें से अगर कोई भी आ जाता है तो आई एम हैविंग माई माइंड ओपन इन दैट मैनर कि बतियाओ, बातें करो, टॉक, कन्वर्स, engage in a way that I don't know. मैं बहुत सोच रहा हूँ, पता है मतलब, as I don't know if you know or not, I'm a perfectionist. So the worst part about being a perfectionist is that you want to do everything perfectly, even if you have no idea about it. So that just basically makes it impossible, because when you are trying something new, the process of learning is what? Process of learning comes from when you let yourself explore the ups and downs, explore the flaws, explore the process. जैसे मैं अभी ये कर रहा हूँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक मुझे पता नहीं है क्या नहीं करना चाहिए, बट अभी तक मुझे पता है कि यू कैन गो आउट देयर, डू समथिंग एंड यू विल फिगर इट आउट, यू विल फिगर आउट व्हाट यू कैन बेसिकली डू, right? Which will be pretty interesting. Might be interesting. There are a lot of things that I'll get to know through this. अब पता नहीं यार, आर्काइव में भी जा सकता है, क्या पता, हो सकता है मैं प्रोफाइल में ना रखूं, हो सकता है मेरा दिमाग खराब हो जाए एट दी एंड कि क्या कर रहा था मैं, क्यों कर रहा था ये सब, पगला गया हूँ क्या। और और बाद में जाके देखा जाएगा। बट द बेसिक आइडिया इज टू अलाउ योरसेल्फ टू द एक्सप्लोर व्हाट एक्सप्लोर द, कैसे बताऊं, एक्सप्लोर द एबीसीडीज ऑफ इट। अभी जब मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे याद आ रहा है कि मैं कुछ दिन पहले बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट डाल रहा था, बहुत सारे इंस्टाग्राम रील डाल रहा था, तब अलग अलग लेवल के ज्ञाने बांटी जा रहे थे। मैं तो इसी टाइप के टॉपिक्स मैं तब भी कवर कर रहा था। तो व्हाट आई बेसिकली was trying to say at that point of time and even now is that when you try to do something new, you are supposed to give yourself the, चलो बकवास कर रहा हूँ, जाने दो। नाउ दिस इज द फ्लॉज ऑफ माइंड। मैं बोलते बोलते ऐसी ऐसी जगह पे खो जाता हूँ कि मुझे पता भी नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सिंस आई एम अलोन नाउ, I'll write my hi myself. So since I am alone now, I would like to think through some of the talks, or some of the some of the some of the things that I have done recently. No, मुझे नहीं बात करनी यार उन सब के बारे में। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, पता नहीं भाई, कान खुजा रहा हूँ बैठ के मैं। दिस द काइंड ऑफ फन आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द होल डे। कल रात से मैं सो नहीं पा रहा भाई। नहीं, मैं बताता हूँ कैसे ये ध्यान में आया, ठीक है। So all these days I have been thinking, I told you in the beginning, right? I have been looking forward for ways that I can contribute back to the community by sharing the things that I do every day. But the problem is being a perfectionist, no? Everything that I do, उसमें से एक चीज आ जाती है, भाई अच्छे से करना है, ये वैसे करना है, वो वैसे करना है, फिर वो ओवरऑलमिंग बन जाता है और एंड में मैं कुछ नहीं करता। आई होप अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू इट। तो उसमें से होता क्या है कि जो फंडामेंटल चीज है ग्रो करने का, which is to do it every day, or which is to live through your character of going through the ups and downs of understanding the whole metrics, understanding the whole game, वो नहीं हो पाता क्योंकि every day you are trying to give your best, which is not possible, right? Which is basically just unrealistic expectation from yourself. तो बैठ बैठ के मैं सोच रहा था, फिर मुझे पता चला भाई मैं लाइव क्यों नहीं जा रहा। लाइक लाइव स्ट्रीम इज वन ऑफ दैट थिंग जो कि takes you away from, that takes away the control out of you. Live stream is such a thing that takes away the control out of you, जहां पे तुम उस परफेक्शनिज्म को
प्रेजेंट होने का मौका ही नहीं देते, बिकॉज सी एंड एवरी सेकेंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, द मिस्टेक्स, the flaws, everything will be there. So the perfection is there, but he's like, ब्रो आ तो गया मैं अब यहाँ पे, बट इस बंदे को मैं ठीक से कैसे बुलवाऊँ, क्योंकि नहीं बुलवा सकते भाई। मैं बोलूंगा, मैं उटपटांग चीज़ें बोलूंगा, मेरे मुंह से गंदी चीज़ें निकलेंगी, मेरे मुंह से चीज़ें निकलेंगी दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, which should be fair, because I'm not expecting this to be the first time, right? I want to come here tomorrow, I want to come here day after tomorrow, I want to come here day after tomorrow, क्योंकि भाई जो सोना बनता है ना, ये एनालॉजी मैं अपने दोस्त को दे रहा था कल, कि यू नो व्हाट द प्रोसेस ऑफ डिगिंग गोल्ड, गोल्ड डिगिंग गोल्ड, जो सोनार होते हैं, गोल्ड डिगर्स होते हैं, नॉट दैट गोल्ड डिगर्स, लाइक पीपल हु एक्चुअली प्रोड्यूस गोल्ड, हाउ डू दे डू इट? दे गो टू प्लेसेस where there are soils. निकलता कहाँ से गोल्ड, सोना मिट्टी से ही निकलता है ना। You take the dumb shit of soil which have no value in the market. अगर तुम अभी एक सॉयल पकड़ के तुम सोनार के दुकान में रख दो, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, बट जो वो सोना वहां से है, वहां पे जो रखा हुआ है ना, वो उसी जगह से लाया हुआ है, एंड दैट thing, that end result of that gold being in that shelf got to be there because someone did that process. और ये चीज बहुत रिलेटेबल है बाकी चीजों में भी, आर्टिस्ट, मोस्टली आर्टिस्टिक चीजों में, लाइक थिंग्स लाइक ड्राइंग, राइटिंग, सिंगिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, यू गाइज नो आई सिंग, आई टेंड टू सिंग अ लॉट, राइट? सो पता नहीं तो जान लो कि मैं गाना गाते रहता हूँ कभी ना कभी, लेकिन दिक्कत तब आती है ना जब मेरे सामने तुम कैमरा रख देते हो। जब तुम मेरे सामने कैमरा रख देते हो ना, तो क्या होता है, आई गेट कॉन्शियस, आई गेट कि ओ, few eyes are in front of me, oh, I am being presented before someone, oh, I am supposed to be like this way, I am supposed to be like that way. अब देखो, इस नॉइज को मैं कुछ कर नहीं सकता, दैट इज इन मी, दैट इज इनसाइड मी, एंड दैट no matter how much I try, I can't get rid of it. So in some way or other, I need to either neutralize it or just ignore it in the first place. So the best way that I have figured out to, or maybe applies to most of the thing, to ignore is to do it multiple times. देख, पहली बार जैसे आज ही मैंने अभी इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला था, ठीक है? तो स्टोरी में जो तुमने स्टोरी देखा वो पहला स्टोरी नहीं था, वो तीसरा स्टोरी था। पहले वाले में मैंने कुछ सोच के बोला कि मैं ये बोलूंगा, चलो अब बोलते हैं। फिर मैं, सिंस मैं सोच के आया हूँ कि मैं ये बोलूंगा, मैं फंबल करने लग गया, एंड एज it should be, it didn't match with my expectation, and I crossed it, and I like, fuck it, I'm not doing it. Then I took another shot कि चलो इस बार करते हैं. In the second shot it became easier, unknowingly it became easier. I'm being presented in with the same set of people, I'm the same fucking person, but this time it becomes a lot easier to put yourself out there, or at least do what you're doing, because you have done it already, and you have told your mind, you have given your mind that, see, it doesn't hurt so much, right? एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या हाल है इस चीज का. I don't know if anyone is coming or not. It is actually working, you know. ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? ये ग्रीन ग्रीन फटकारे क्यों मार रही हैं? I don't know why is this happening, but something is wrong. Something is hella wrong. Oh, people have seen it. Quite a people have seen it. If any of you have seen it and you are here, give me a hi. We can proceed, or we can. I'll get to know that you are here and we can talk accordingly.
राइट। या वो सही है, मतलब कुछ खराब नहीं है। या वो सही है, मतलब कुछ खराब नहीं है। And my noise is also by the way, I'm using, so मैं जब इंस्टाग्राम स्टोरीज बना रहा था ना, वीडियोस बना रहा था, तब मैंने ये माइक ली थी रोड की, विच सरप्राइजिंगली थोड़ा कॉस्टली है, मतलब 7,000, 7,000 नहीं, 9-10 हज़ार का था, 11,000 का था, बट it sounds really 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 nice. And one of the issue with my last videos were कि उन वीडियोस में नॉइज बहुत खराब था, एंड everyone was saying the same thing, that as if everything is good, but change your mic or buy or invest in a certain mic. So one of my artistic friend told me about this mic, which introduced me to in a different dimension of कितने तरह के माइक्रोफोन होते हैं यार, तुम लोगों को पता है माइक्रोफोन के कितने टाइप्स होते हैं? This is called directional microphone, which basically means, I shouldn't touch it, right? It should make noise. Which basically means it only takes voice from what's coming from the front. So जो अगर मैं पीछे जाके बात करूँ तो उतनी ढंग से बात आएगी नहीं, तो उतनी ढंग से आवाज आएगी नहीं. So this kind of microphones are basically used in cameras, DSLR cameras, and other stuff. But I managed a way to use it with my phone as well. तो मैंने क्या किया, मैंने एक वो ले लिया, कैमरा होल्डर, माइक फोन होल्डर के साथ कनेक्ट करके देयर इज अ नॉच इन द एंड वेयर यू पुट द कैमरा, एंड वाला टाइप सी टू टाइप सी दोनों कनेक्ट हो गए. बात करो कितने बात करने वाले. भाई सच बताऊं, मैं बोर हो रहा हूँ. बहुत गंदा बोर हो रहा हूँ मैं. किसी को बुला लेना चाहिए था यार. बाय द वे, हाउ डू यू थिंक माई this is cool, right? Not my face, sorry, this thumbnail. So मैंने झट से बनाया ये canva से. I'll give you guys one tip, okay? That basically applies for any kind of artistic thing that you do. It may be content, it might be design, it might be, I don't know, writing. The best way to start any content, the best way to learn or to apply any skill is to copy from the existing one. Easiest way possible. Like imagine someone, I'm imagining my sister. She doesn't know anything about most of the thing that I do. So if I tomorrow want her to do this, the best way I can teach her, the fastest way, the hack to tell her how to do this is to give her the best pieces out there that actually showcases the quality that I am looking forward to, और मैं उसको बोलूँ यहाँ से कॉपी करके खुद की तरह बना ले. This has been the best way I have learned basically for whatever I do in a proper manner. तो लोगों को, तुमको लगता होगा कि तुम्हें कुछ नहीं पता, राइट? इन योर माइंड यू थिंक यू डोंट नो हाउ टू राइट, यू डोंट नो हाउ टू डू डिजाइन, you don't know how to create content, you don't know how to go do shoot photo shoot. But basically you do not have to know. It all starts from copying. वो एक बात बहुत यहाँ पे लागू होती है, fake it till you make it. You do not have to make it perfect before you start implementing it anywhere. Because तुम अगर देख, अगर मैं बता रहा हूँ, कल को तुमको कुछ ad बनाना है, you started your own business and you want to create ads for your product. Let that product be some clothing, I don't know, for a t-shirt. तुमने बैक प्रिंट टी शर्ट का ब्रांड खोला हुआ है and you want to create ads around them. So what will be the best way to do it? Don't open Coursera. Don't open YouTube and search how to write ads, how to create ads. No, that is the one way to do it. But the problem is the field is so big in itself. No, there are so intricacies in those fields. No, कि once you start get into them,
you will get lost in those all this thing कि मुझे ये सब जानना पड़ेगा before I even get started, which will put you in an imposter syndrome. I don't know if the right example है imposter syndrome ना. Basically तुम्हें जब पता चलता है ना कि दुनिया में उतनी सारी तरीके हैं इस चीज़ों को करने के लिए, तो तुम्हें लगने लगता है कि मुझे ये सब चीज़ जानना पड़ेगा फर्स्ट हैंड in order to implement them, which is not true. It's not. It can be done. It can easily follow the 20-80 rule, that 20% of the 80% of the result can be done through the 20% of the knowledge, and the 20% of the knowledge you can gain by copying from the top creators. So if I take the example again, you're starting a t-shirt brand and tomorrow you need to create ads and you do not know anything about ads, just go on Instagram, just swap, just scroll, and look out for and engage with kind of content that have t-shirts. So basically engage the kind of content that will make you more likely to see t-shirt kind of ads. तो जब तुम देखना स्टार्ट कर लोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से विनिंग प्रोडक्ट्स हैं वहां पे, राइट? तो एक बार तुम्हें वो सब ऐड दिखने लग जाए तो यू नो कि दिस आर द काइंड ऑफ एड्स दैट फेसबुक और द इंस्टाग्राम इज शोइंग टू पीपल. सो नाउ एज आई जस्ट टोल्ड यू कि दूसरों से सीखो. सो दिस इज वन ऑफ द लाइव पीस दैट यू हैव. तो पिक इट अप, उस कंटेंट को उठाओ, कॉपी करो, कैनवा में डालो, कहीं भी डालो, फोटोशॉप यूज, देयर आर एप्स लाइक कैनवा, देयर आर ऐप लाइक फोटोशॉप, आई होप यू नो इट. तो जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट, कॉपी इट एग्जैक्टली डिटो, और अपने तरीके से बना लो. तो दिस माइट बी मोरली रॉन्ग फॉर people who knows how to misuse it, but trust me, if you're learning and you're starting something in a new venture, you're starting a new venture, this is the best way to do it. And I believe people should do it. Why not? Wow, I spoke for 21 minutes being alone. भाई कोई तो आजा. But सही है यार, this shows you patience. Like this Friday night, people are all busy, people are in their work. Hey, Shreya saw the photo video. Let me give him a call. The number you have dialed is live rejection. Ban karo. So yes. So this is one of my friend who does all these things a lot, content creation and blah blah. Bro, I'm live for 22 minutes, man. That's crazy. But one bad thing about live is, कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने ये क्यों स्टार्ट किया लाइव स्ट्रीमिंग. मैंने ये इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट द वेरी इंटरेस्टिंग वे टू क्रिएट कंटेंट, or the very interesting way to create anything, be it writing, be it drawing, be it song, is to keep doing it a lot of time. जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था कवर लिखने का, keep doing it so many time that you get used to the process, and once you're used to digging the soil, the gold comes up. सो मेरा गोल क्या था, कल बैठ के मैंने सोचा कि 20 मिनट इसको बनाते हैं, मतलब आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी करूँ, आधा घंटा 1 घंटा बैठ के वीडियो बनाओ, और क्या करो फिर एक्सपेक्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस दैट डाउन द लाइन ऑफ 1 hour you will get something interesting out of it, right? So yeah, bro, going live makes you feel naked, man. Like basically someone is watching, and that's now breaking. Why are you watching? Go away. So basically what the thing is, being live is like, here, hey world, here it's me, I am in front of you, and this is what I look like, this is what I sound like, and this is how I talk. Someone is watching. Please write down who you are so that I can know.
and yeah, we can engage. पता नहीं यार क्यों कर रहा हूँ मैं ये. So the thought was very interesting. मैंने क्या सोचा था कि सी आसिफ, एनीवेज इन सम वे और अदर यू गोना मेक कंटेंट. ट्विटर में लिखो, यूट्यूब में लिखो, इंस्टाग्राम में बनाओ, किस तरह तो तुम बनाओगे. तो why not just do it live? Why not just, and also one of the interesting thing all of this process, you need to create that feedback loop of, imagine I created a content around what? Created a content around fashion, dripping it. So now, how will I know that that is something that people are looking forward to? How will I know that is a pull content that people are actually wanting to hear? तो लाइव में ये चीज़ ईजी हो जाती है कि इफ यू आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग, you'll get to know what is the thing that is being talked around, what are the thing that is being talked around जिसके अराउंड तुम कुछ बना सकते हो. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सिचुएशन क्रिएट हो नहीं रहा, मैं आई प्ले आउट माई माइंड कि मैंने सोचा था, सोचो कोई बोलेगा कि व्हाट आर द इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग ऑन, तो हम उस प्रोजेक्ट में बात करना स्टार्ट करेंगे. सो once we start talking about those projects, there will be insight that are coming out of those conversations, right? So that in itself can stand out as a real life content or something else. That was my first idea. So yeah, someone is watching. I don't know who is watching. Hi, one fellow, whoever is watching. Please write your name. We can talk. We can do whatever. Not whatever. Just talk. That will be an interesting conversation. By the way, एक चीज है जो I see I have done, like I will say this is one of the mistake that I did yesterday, that the idea of creating the idea of going live struck my mind. इसमें से मुझे लगा क्यों ना मैं लाइव जाता हूँ, बट आई डो नॉट हैव ए कैमरा. क्यों ना मैं कैमरा खरीद लूँ ताकि मैं अच्छे वीडियोस बना पाऊँ. And that dropped me into a bad loophole of going through all this, ऊपर से ये Amazon Flipkart के sales, that threw me into another loophole of learning about camera. कितने तरीके के कैमरा हैं, कितने कॉस्टली मार्केट है भाई, एंड व्हाट इज द बेस्ट यूज केस फॉर द करंट सिचुएशन दैट आई वांट टू यूज इट फॉर. यूज करने के लिए तो बहुत रीजन है. आई कैन डू दिस, बेसिकली आई एम प्लानिंग टू डू इट एवरी डे, but there are other use cases also, because dripping gear के लिए we are doing photo shoot nearly around every week. So that will be a very useful case. Other than that, या मोस्टली दिस टू. और हो सकता है रील बनाने लग जाऊं, पैसा खर्चा करूंगा तो अंदर से वो आ भी जाता है कि लेट्स क्रिएट, लेट्स टॉक, लेट्स डू समथिंग दैट इज यूजफुल. बट अगेन आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ की ज़रूरत नहीं है कि अगर तुम कुछ चीज़ कर रहे हो तो एकदम तुम्हें स्टार्टिंग में ही यू डोंट हैव टू start to invest in all those cameras things, and because that is kind of an excuse, right? Trust me guys, अभी मेरे एंजाइटी हिट होनी स्टार्ट हो गई है, बिकॉज दो व्यू हो गए थे इसके लिए. आई नो यू गाइज आर माई फ्रेंड, आई नो, बट आई डोंट नो हु यू आर, राइट? सो दैट इन itself is a kind of anxious situation to be in, and I like it. I enjoy it a lot. Anxiety was what you live for. Another rule that I live by and you should follow: imagine if you're in a situation where you have multiple things to do. ठीक है? Thing A, thing B, thing C, and all of them have their own pros and cons. Considering your life choices, which one should you go for? I believe always the one which gives you the most of dopamine. जिसको सोच के तुम्हारी सबसे ज्यादा फटे उसको करो. Because after you do it, it will be an experience for sure in itself. But after you do it, after you complete it, you're gonna be a different person.
you're gonna a different person who knows what it feels like. क्योंकि समझ रहे हो ना भाई, if you're anxious about that topic, how insecure you are. If you're anxious about that topic, how inadequate or lack or that hollowness you feel inside yourself for that particular thing. But if you have took the effort of going through that, or overcoming that particular feeling, you actually prove your mind that whatever the fear I was having in my head, whatever the kind of limiting belief that I had कि ये करने से ये होता है, won't happen, right? तुम्हें like, yeah, basically that is the gist. Like, I saw a reel recently, not recently, quite a while back, जिसमें जो जोकर का नहीं, क्या नाम है उस मूवी का, नाइट, अरे मार्वल का मूवी है यार, मार्वल की सीरीज है, द नाइट और समथिंग, आई फॉरगॉट, जहाँ पे वो इजिप्ट की स्टोरी चलाती है। तो उसमें जो हीरो था ना, उसकी एक मैंने क्लिप देखी थी इंस्टाग्राम में। दे से व्हेन इज द राइट टाइम टू जंप ऑफ अ क्लिफ, कि तुम एक क्लिफ में खड़े हो, ठीक है, फॉर सुसाइड के लिए नहीं, फॉर सम पर्टिकुलर वर्क में भी, बंजी जंपिंग और समथिंग, हाँ, यू बंजी जंपिंग के लिए, when do you know, which this is basically a metaphorical thing to do, कि when do you know it's the right time to jump, and he says whenever you are more afraid of it. यार ये लाइक वाइक मत दिया करो यार, मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहा हूँ, नहीं होना चाहिए बट हो रहा हूँ। I'll really appreciate if you comment something we can talk about, or write down what it, नाम लिख दो भाई, हाई हेलो कुछ तो लिख दो। किस बारे में बात कर रहा था मैं बात कर रहा था, किस बारे में बात कर रहा था मैं, आई फॉरगॉट। किस बारे में बात कर रहा था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, मेरे को पता है, नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। आई वॉज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द राइट टाइम टू जंप, एंड एज आई सेड, पंच लाइन मैंने बता ही दिया, व्हेन यू आर मोस्ट अफ्रेड ऑफ इट, which basically have proven to be a very insightful trajectory. To be example, मैं 2022 को बैंगलोर आया, ठीक है, and coming to Bangalore was in itself a big decision, and it was a very jumping from the cliff kind of a decision, because उस टाइम पे मैं कर रहा था अपने paramedic course. I'm a paramedic student basically, and I did it for like 3 years. I completed it, and at the time of doing internship, I got my offer letter from Sipli, my last company, where I was stuck in a situation जहाँ पे I need to tell my father कि पापा मेरे को बैंगलोर जाना है, I got this job, but I'm going to a place where I have no source of contact, no source of mutual contact. I don't know anyone from Bangalore. And he was not very positive about that, but I still did it. It was kind of like jumping from the cliff decision, and I did. And looking back the situation, hopefully it was the right decision, right? Might not have been very healthy for me, but sometimes you need to take a shot, and those shots is what gives you the fuel to live your rest of your life. Those are the major defining moment of your life that actually changes you from your core of who you are and who you believe you are. That is very interesting topic of believing in yourself. Like, whatever I'm jumping into a different topic, whatever I have done in my life has come from me changing into a different person every certain time. For an example, I'm sure you know
कि जब मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरीज डालना स्टार्ट किया था, पोस्ट करना स्टार्ट किया था, आई डिड अ इंट्रोडक्टरी स्टोरी वेर आई सेड that this is something that is now breaking for me, putting a camera in front of myself at that time, at that point of time, and talking my heart out. That moment in itself changed the way I take myself. Like, तुम ऐसे सोचो, I'll give you an example. Okay, there are two Asif, or there are two Asif ले लो example. There are two Asif, Asif A, Asif B. Asif A is before jumping the cliff, Asif B after jumping the cliff. What are the experiences Asif A has? Everything that Asif B has, except doesn't know how to feel like jumping from a cliff. And what is the thing that Asif B has? Everything that Asif A knows. Above the most of the biggest fear that Asif A has, that he have achieved. तो ये ट्रांजिशन तभी आता है कि तुम अपने पिछले वर्जन का बेस्ट वर्जन हो. Overcoming the biggest challenge for your previous version happens when you take that leap. And that is why it makes sense to take those jumps sometimes. That is why it makes the whole process worth it, right? Hearts after hearts after hearts. By the way, I'll tell you where I'm getting a kind of a deja vu, okay? Like, because in 2021, 2021, 2022, somewhere around COVID, I used to follow Samay Rana a lot. Like, at that point of time, Samay Rana recently started his recently started his channel. He started by playing PUBG with Tanmay Bhatt, and after that he started his own YouTube channel where he used to stream chess. और उस टाइम उसने एक बात बोली थी कि having four people watching a guy play chess is a big win. तो मैं कल से जब ये सोच रहा हूँ कि मैं ये करूँगा, तो इट फील्स लाइक ओके, आई एम लिविंग थ्रू दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, आई गेस, कि जो मैं कल तक देख रहा था, अभी मैं वो बनने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम टेलिंग माई माइंड कि ओके, दिस इज द न्यू नॉर्मल फॉर यू नाउ, दिस इज हाउ यू आर, दिस इज फ्रॉम आसिफ ए टू आसिफ बी, यू आर taking that transition, you're taking that clip, you're taking that jump, big jump. Sounds pretty interesting. Great. I think I have done a long session with myself. It feels like a therapy session. Great. But I hope next time I'll come. Tomorrow I'll come. I'll have something to talk about specifically in my mind. I think I should wrap it up. खाना भी बनाना है यार. Uh, Tomorrow I come. I'll have something specific to talk about because I don't know. To be very honest, before doing this, I was very nervous. I could not do any of my routine work that I should be doing because of all this rat. पेट में चूहे दौड़ रहे थे मेरे. चूहे नहीं बोलूंगा, पेट में बटरफ्लाइज, चूहे it seems. तो those were giving me all those uncomfortable kind of feeling, but I'm like, just go, Asif, just open the laptop, just take your mic out there and just talk. There will be people, someone will come. If they talk, you talk, otherwise you just do. Because talking in front of camera is not new for me, by the way. I do it a lot. If you open my gallery, you will always find a video where I am interacting with myself and I am having a full-fledged conversation. But only the problem starts when I know that someone is listening to me. That is when I break down. But yeah, I know I will overcome through this feeling. And I hope whoever is putting down those hard put me a text in WhatsApp, because it's giving me a lot of curiosity, like who this person is. Chalo, see you guys. Bye bye. I will let this stream be there. I'll try to take few things out of it and post it in Instagram. कुछ तो फायदा हो यार. I should utilize my time properly.
So this was my basically the plan. Ki I be here for 20 to 30 to 1 hour, talk about multiple things, give out all these soils, and then extract the gold and use it in other particular manner. I'll talk about distribution. Yeah. I thought when before I come here, I thought I'll talk about distribution, but let it be for tomorrow. So, yep, the gold will be extracted by me in some time, and I'll put it in Instagram. I hope it is good. Even it's not good, who gives a fuck? Anyways, two people are watching. So yeah, see you guys. Bye bye.